Hi guys, welcome back to my YouTube channel Canva with Shrika. So in today's video, we are gonna learn how to make a face wash tube mockup. So yeah, without further ado, let's get started. So first choose a rectangle shape, just type R or select from the elements. Shape it according to your screen and then color it whatever color you like. I have chosen lavender as I am making a lavender face wash, and then type all the necessary details that are required, like I have written reduces dullness, prevents pimples, for normal to oily skin, 100% soap free, and write all the details whatever the client asks you to do. And if you are making just for your portfolio, write whatever you think is important for it, and adjust the size according to your design. Choose a beautiful font or the font that suits your design. You can just try and test whatever font you think look good on it, and choose a color that complements your background color. After you're done with it, just write the product what you are selling or the product name, like it's a lavender face wash. So I will try and test some good font with it. I have used pop pens, like I am seeing different fonts that work for my designs, and choose the font color is your background design color. As I have chosen lavender, so आप उसके dark shades, light shades, you can try and test and see whatever looks good for your design. आप उसको सेंटर अलाइन करो, लेफ्ट अलाइन करो, राइट अलाइन करो, जस्ट सी वट एवर लुक्स गुड. देन कंपनी का लोगो एंड लोगो का नेम, वट एवर कंपनी आपकी जो भी कंपनी है, अगर आप ऐसे ही बना रहे हो नॉर्मली, सो जस्ट सर्च ऑन लोगो, बहुत सारे लोगों के ऑप्शंस मिल जाएंगे. जस्ट चूज़ वट एवर यू थिंक लुक्स कूल फॉर योर डिज़ाइन, गिव दैट ब्रांड अ नेम एंड यू आर रेडी टू गो. अगर आपको इस तरह के और ट्यूटोरियल्स चाहिए या कुछ भी ट्यूटोरियल चाहिए, यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. लाइक मैंने अभी यहाँ पर ब्रांड का नेम सुप्रीमो चूज़ किया है because I'm not making it for a particular brand. I'm making just to show you guys how you can make. So yeah, it's an easy process. आप एक दो बार ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, प्ले विथ कलर्स, प्ले विथ फॉन्ट्स, साइजेस उसके एडजस्ट करके देखो. वट एवर आपके डिज़ाइन के लिए जो साइज़ सूट करता है उसको, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर पर्सन ने उसको ऐसे ही किया था, आप उससे इंस्पिरेशन लो बट डोंट कॉपी. अब हम उस चीज़ के मॉकअप्स बनाएंगे. सो मॉकअप का इन डिटेल ट्यूटोरियल वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर है, जिसमें मैंने ये मॉकअप भी शो कर रखा है. सो अगर आपको इन डिटेल ट्यूटोरियल चाहिए, सो आप उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हो. आई विल ड्रॉप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और इट विल बी इन द पिन्ड कमेंट्स. So yeah, just go and check it out, and thank you for watching.